Hello children, welcome to science class. This is your chapter 12 and today we are going to understand about electricity and circuits. In this chapter, we will know about the use of electricity and what is circuit. So let's begin the chapter. Can we imagine a life without electricity? No, we cannot imagine a life without electricity. We use electricity in so many ways for so many purposes. Today we use electricity almost in every way in our home. In our electric appliances, we use electricity in factories, in schools, in homes, in everywhere we use electricity, and we cannot imagine the working of our life without this electricity. फैक्ट्रीज में जो बड़ी बड़ी मशीन्स काम करती हैं, एक सामान को दूसरी जगह एक सामान को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर उठाने के लिए या किसी भी चीज़ को अप्लायंस को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है. दिस इलेक्ट्रिसिटी मेक्स आवर वर्क ईजियर. Besides this, we use electricity also for lightning. क्या हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के देख सकते हैं? नहीं. इलेक्ट्रिसिटी हमें लाइट प्रोवाइड करती है एंड वी सी विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी. In nature, we can see with the help of sun. But when there is no sun or when it is dark, then what we have to do? With what we will see? Well, we need some light to see, and for that purpose we use electricity. How does this electricity is supplied to our homes? Actually, electricity is generated in power stations. From there, it is transferred to transformers through cables. They are supplied to our homes through the wires, and then we get electricity. But there are some small devices that use or that provide us electricity, and it is called as an electric cell. So what is this electric cell? Actually, electric cell is a source of electricity which is helpful to provide electricity in small devices like torch or bulb or toys to run them. We all have seen electric cell. For example, we have seen such type of cell in a torch or in a watch, clock, in a small devices like toys. So what we see in this type of cell? We see a small cap-like structure here. This is made up of metal and it is known as metal cap. What it is known as? It is known as metal cap. This metal cap denotes here the positive terminal, and there is a flat disc like below this, and it is called as negative terminal, which is denoted by minus sign here. So in every cell we can see a positive sign along the metal cap and a negative sign along the metal disc. So this function, so there are two types of terminals in a cell, a positive terminal and a negative terminal in every electric cell. Here we can see the structure of a bulb. What do we see in this bulb? Here we can see that a bulb is covered, or has a cover, and this cover is made up of a glass case. It is made up of glass case here.
It is covered with a metal case. This is metal case here. Inside this there are 2 points here like this. These are 2 points here in this, and these are connected with a spring like structure. This is called as filament. It is called as filament here. So these 2 points are connected with a filament, and these points are uh, connected at the base and at the tip and function like two terminals. As we can see here, one is here and the other one is here. So these are two terminals. So we can see in a bulb a glass case, a filament, and here two terminals. So these two terminals are attached with the wire. From the one end of a wire is connected here and the other end of a wire is connected here. So in the bulb we can see that when this filament is heated, when the switch is on or when the bulb is provided electricity, this filament gets heated, and when it gets heated it glows, and we see that bulb is glowing or the bulb is on. So in this way the bulb glows. Now in activity, what we can see here, take a torch and look inside its bulb. You can also take out the bulb with the help of your teacher. What you notice? Do you find then a thin wire fixed in the middle of the glass bulb? Now switch the bulb torch on and observe which part of the bulb is glowing. तो हम क्या देखते हैं इसके अंदर? हम यही देखते हैं कि इस फिलामेंट के जलने से ही इस बल्ब को हम जलते हुए देखते हैं. तो बेसिकली जब इस बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है तब ये फिलामेंट गर्म होता है और फिलामेंट के गर्म होने से बल्ब ग्लो करता है. कभी भी दो terminals directly electric cell के without any connecting them through a switch, they should not be joined. And a device like bulb में कभी भी हमें दोनों टर्मिनल्स को डायरेक्टली नहीं कनेक्ट करना चाहिए. अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा? द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल गेट यूज्ड अप वेरी फास्ट. तो जो इलेक्ट्रिक सेल है उसके अंदर जो केमिकल फिल होता है वो बहुत जल्दी यूज्ड अप हो जाता है. सो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक सेल है उसके अंदर केमिकल की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है. तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक सेल के अंदर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. Thus, both electric cell and the bulb have two terminals each. इस तरह से बल्ब एंड इलेक्ट्रिक सेल में जो होते हैं दो टर्मिनल्स होते हैं और दोनों टर्मिनल्स को अपोजिट वे में हमें ज्वाइन करना है. दैट मीन्स एक पॉजिटिव को नेगेटिव से एंड नेगेटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से. अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल. किस तरह से बल्ब का कनेक्शन हमें इलेक्ट्रिक सेल से करना है, इसके लिए एक्टिविटी हम देखते हैं. टेक 4 lengths of electric wire with differently colored plastic coverings. इस तरह से 4 इलेक्ट्रिक वायर्स लें प्लास्टिक कवरिंग्स के साथ में. रिमूव अ लिटिल of the plastic covering from each length of the wire at the ends, and this would expose the metal wires at the ends of each length. Fix the exposed parts of the wires to the cell and the bulb as shown in figure. What we see here, we have to connect these wires with one end of this cell and the other with this negative. So the positive terminal of a cell is connected with the wire and the negative
terminal is connected with another wire. So what we have to do, we will stick the wires to the bulb with the tape used by the electricians. जो electricians tape use करते हैं उसकी हेल्प से हमें इन वायर्स को जो बल्ब में अटैच है वायर या उनसे हमें कनेक्टेड करना है. नाउ वायर्स को कनेक्ट करने पर क्या होगा, क्या हम देखते हैं इस पे. इन वायर्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो वी विल सी दैट द बल्ब इज glowing here. So the bulb glows तभी करता है ग्लो बल्ब जब कनेक्शन सेल के साथ में प्रॉपर वे में हो एंड इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल से वायर प्रॉपरली कनेक्टेड हो. अदरवाइज अगर हम कनेक्शन को कहीं पर ब्रेक करते हैं या हम सेम पॉइंट से दोनों वायर्स को कनेक्ट करते हैं then the bulb will not glow here. So in this picture, as you can see here in picture A, what you see, the positive terminal is connected to the one terminal of bulb, the negative terminal is connected to the another terminal of the bulb, so the bulb glows. What happens in the next one, in next picture? As we can see here, now carefully look at the arrangements in which the bulb glows. Compare these with those in which the bulb does not glow. Can you find the reason for the difference? क्या आप डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं जहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है जिनमें. तो ऐसा क्यों है कि एक अरेंजमेंट में बल्ब ऑन है बट दूसरे अरेंजमेंट्स में बल्ब ऑन नहीं है. नाउ लेट अस सी इन द सेकेंड पिक्चर हियर. सेकेंड पिक्चर में अगर हम ऑब्जर्व करें तो सेकेंड पिक्चर में टर्मिनल्स को चेंज कर दिया गया है. यहाँ पर बल्ब का एक टर्मिनल जो पहले यूज़ किया गया था अब दूसरे पॉइंट, अब ये कनेक्शन चेंज कर दिया यहाँ पर, बट द टर्मिनल आर सेपरेटली कनेक्टेड एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड करेक्टली. दैट मीन्स वन टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से जो वायर आ रही है वो इस बल्ब के दूसरे टर्मिनल से ऐड कर दिया, कनेक्ट किया है, और इस वाले टर्मिनल से यहाँ पर ऐड इसको कनेक्ट किया है. तो दैट्स वाई द बल्ब विल ग्लो. बट इन द नेक्स्ट पिक्चर व्हाट डू यू सी? In the picture C, what we observe here, the connection is not in proper way, or we can see that the wire is broken here. What we see, the connection has been broken here, so the supply of electricity is not completed. In the same way, what we see in the picture D, both the wires are connected with the same terminal, so that's why the electric supply is not completed, it is broken and it is the wrong way. In the next picture what we see that the electric wires, again these wires are not joined with separately, but they are connected with the again same positive terminal, which is again wrong. In the next one, in this picture, the terminals are interchanged here. The bulb के जो टर्मिनल्स हैं वो इंटरचेंज कर दिए गए हैं. जैसे कि अभी हमने समझा था कि बल्ब के अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, और दोनों ही टर्मिनल से वायर को हम अलग अलग कनेक्ट करते हैं. तो अगर हम एक टर्मिनल से यहाँ पर कनेक्ट करते हैं और दूसरे टर्मिनल से यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, या फिर हम वायर को इस तरह से यहाँ पर टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर दें तो भी बल्ब चलेगा, तो भी बल्ब ऑन होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बल्ब के जो टर्मिनल्स हैं वो दोनों ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल का काम करते हैं. तो दैट्स वाई द बल्ब विल ग्लो इन दिस कनेक्शन. बट इन दिस पिक्चर व्हाट वी सी, इन दिस पिक्चर the connection is
again the connection is broken here. The wire is not joined here, it is broken here. So the supply of electricity is stopped and the bulb is not glowing. So what we see through this pictures, what we can conclude, that we can conclude here that in picture A, the bulb will glow because the circuit is complete or the supply of electricity is completed with proper connection. And in the same way, in picture last also the connection is given properly and so the bulb glows. But at the same time, the rest of the pictures shows that the connection is not properly done or it is broken. So the bulb will not glow in these pictures. So it is concluded here, unless and until the terminals are properly joined with the connecting wire through the device, the supply of electricity will not be properly completed. An electric circuit. What is this electric circuit? Actually, the path of the current, the direction in which the current flows, that is called as electric circuit. The wire is connected to the positive terminal from one terminal of the bulb, the other terminal of the bulb, and then the negative terminal. So in this way, if the path is completed with the supply of electricity, then it is called electric circuit. Means जिस रास्ते के थ्रू, जिस पाथ से होता हुआ इलेक्ट्रिक करंट जाता है, that is called electric circuit. And the direction of the flow of electricity is always from positive to negative. कभी भी इलेक्ट्रिक सप्लाई या इलेक्ट्रिक पाथ जो होगा करंट का, वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ नहीं होगा. इट विल बी ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो दिस इज इलेक्ट्रिक सर्किट. नाउ there are two types of circuit. One is open and the other is closed circuit. What is this open circuit and closed circuit? Suppose the connection is properly given to the device, but somewhere the bulb is not glowing. हो सकता है वायर कहीं से कटा हो या सेल पूरी तरह से चार्ज ना हो. The cell might be discharged, chemical might be used, or the bulb may be fused. So in that connection the bulb will not glow. So we will say that the supply of electricity is not completed, the electricity is not supplied to the device, and when there is no current in the circuit, it is called as open circuit, and if there is electricity in the circuit, it is called as closed circuit. It means in closed circuit the electricity will flow, and in open circuit the electricity will not flow. What is a fuse bulb? A fuse bulb is said when the filament of a bulb is broken. The reason of fuse bulb may be other also, but generally when the filament is not glowing, then the bulb is said to be fuse. ये फ्यूज़ कैसे हो सकता है, फिलामेंट कैसे ब्रेक हो सकता है? जब ज़रूरत से ज़्यादा ये हीट अप हो जाए एंड ब्रेक हो जाए, तब ये बल्ब नहीं जलेगा, नहीं ऑन होगा, एंड इन दैट कंडीशन इट इज़ कॉल्ड एज फ्यूज बल्ब. नाउ in activity 3, what we can see that how to make a torch. We can make a torch ourselves. कैसे हम torch एक बना सकते हैं? We will take a cell, an electric cell. एक electric cell की requirement है, and one connecting wire and a small device that has to be supplied current. So bulb. इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए या टॉर्च बनाने के लिए हम क्या करेंगे? वायर को नेगेटिव टर्मिनल से, एक वायर को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, एंड इट विल बी कनेक्टेड टू द वन टर्मिनल ऑफ द बल्ब, एंड देन bulb is directly connected with the positive terminal of the cell.
So in this way it becomes a complete circuit and the bulb will glow. This is the way to make a torch. Electric switches. What are these switches? Actually जो हमारे घरों में स्विचेस होते हैं या स्विच हम देखते हैं, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम कभी ऑन करते हैं एंड ऑफ करते हैं। जब हम उसे ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस काम करने लगते हैं, और जब हम इसे ऑफ करते हैं तो इलेक्ट्रिक स्विचेस ऑफ करने पर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस काम करना बंद कर देते हैं। तो बेसिकली स्विच इज़ अ डिवाइस टू ब्रेक और ओपन, टू ब्रेक और फंक्शन द सर्किट। या तो ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए हम इन स्विचेस को यूज़ करते हैं। वी कैन मेक दिस स्विचेस बाय आवरसेल्फ। हम घर पे हम इस स्विचेस को बना सकते हैं। हाउ वी कैन मेक आवर स्विच? फॉर दिस वी नीड अ थर्मोकॉल। We need a thermocol here, 2 board pins, 1 safety pin and the connecting wire and a device bulb. So how to make it? Let's see. The board pins will be pierced. बोर्ड पिन्स को क्या करना है, हमें इसको हमें थर्मोकॉल में पियर्स करना है एंड सेफ्टी पिन उसमें लगा करके। द सेफ्टी पिन हैज़ अ होल लाइक दिस। इसमें हमें वायर को कनेक्ट करके इसमें बोर्ड पिन को पियर्स कर देना है इस तरह से। सो इफ़ वी कनेक्ट वायर हियर एंड दिस वायर इज कनेक्टेड विद द टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब, फ्रॉम हियर the bulb is connected to the positive terminal. The bulb is connected through the wire with the with positive terminal of the cell, and the other one is negative terminal. So in this condition we can see the bulb will not glow. Why the bulb will not glow? Because this safety pin, it is a metal pin and it is not connected with the other board pin. So the supply of electricity is broken here. But when we connect this safety pin with the board pin, then the bulb will glow. It means the supply of electricity is given. So in this way we can make a switch which will function like an on and off. Now look at this electric appliance, a torch. What do we see in a torch? We see that a torch has a bulb. Torch में क्या होता है, एक bulb होता है. It is connected directly to the cell with the positive terminal. It has another cell and these two cells are connected. These cells are connected with a wire and this wire is connected with a switch here. We see this arrangement in a torch. This is covered by a plastic case. How this functions? किस तरह से ये फंक्शन होता है? जब हम टॉर्च को ऑन करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें इस स्विच को हमें स्लाइड करना है पीछे की तरफ। जैसे ही हम इसे पीछे की तरफ स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर जो वायर का कनेक्शन है स्विच से, दैट इज़ ब्रोकन, एंड जैसे ही कनेक्शन ब्रोकन हो जाता है then the supply of electricity is broken and the bulb will not glow. It means the circuit is open now. But when this switch is slide forward, जब ये आगे की तरफ हम स्विच को फॉरवर्ड करते हैं तब ये स्विच वायर से कनेक्टेड हो जाता है and the circuit becomes closed. In that condition the electricity is supplied to the bulb and the bulb glows. This is how a torch functions. बेसिकली फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक सेल जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए हमारा सोर्स है। सेकेंडली एक कंडक्टर जिसे हम वायर, मेटल वायर को यूज़ करते हैं। थर्डली एक डिवाइस जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, या हमें लाइक जैसे बल्ब जिसमें हमें
देना है इलेक्ट्रिसिटी को, उसे हमें ग्लो करना है. So 3 things are required for a closed circuit. Minimum requirement. Now let us see what are these conductors and not insulators. Conductors are those materials which can conduct electricity. तो कंडक्टर्स हम किसे कहेंगे? कंडक्टर्स हम उन्हें कहते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. कंडक्टर्स कौन है? जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. जैसे metals. Metals are good conductors of electricity. But what is insulator? An insulator is that material which do not conduct electricity, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल रबर, वुड, पेपर, these are the examples of insulators. Like plastic is also an insulator, and that's why we see if in an electric circuit any insulator is joined, then the circuit becomes open. Let us find out this through this activity. अगर हम इस एक्टिविटी में देखें, यहाँ पर पिक्चर ए, इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि द इलेक्ट्रिक सेल is connected to the bulb through an electric wire which is a conductor. This is connected to the metal key, and this metal key is connected to the cell with the help of electric wire. So the bulb glows. So this is a complete circuit. But if anyhow the connection is broken here, then the supply of electricity will also break, and we will see that the bulb will not glow. So let's find out here. Taking some more examples of materials, like if we see key, if we add key, then key is metal, supply will be there, it means the circuit will be closed. If we use eraser, eraser is insulator. Scale plastic, again it is an insulator. Mastic insulator. Glass bangle is also insulator. Iron nail, it is a conductor because it is made up of metal. So these so we can conclude here, some of the materials are insulators and some of the materials are conductors. If conductor is connected in the electric circuit, then there will be supply of electricity, but if there is insulator, then the circuit will become open. What is the purpose of using conductors and insulators? Well, conductors are used to supply the electricity. इनका होना, इनकी वजह से ही हम सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं डिवाइस तक. फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने घरों में देखें तो हमारे घरों में जो स्विचेस के अंदर वायर लगे हैं, दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स, और उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है. बट एट द सेम टाइम देयर इज़ एन इक्वल इम्पोर्टेंस ऑफ इंसुलेटर्स ऑल्सो. जो इलेक्ट्रिक वायर्स हमारे घरों तक आते हैं, दे आर कवर्ड विद प्लास्टिक कवर्स, या जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, दे आर कवर्ड विद प्लास्टिक्स. क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिक्स जो हैं, दीज आर इंसुलेटर्स एंड दे प्रिवेंट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक. ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाते हैं. इसीलिए इलेक्ट्रिशियंस जो होते हैं, दे यूज़ प्लास्टिक कवर इन द टेस्टर्स, और जब भी वो इलेक्ट्रिसिटी या इस तरह के इलेक्ट्रिक कनेक्शन में काम करते हैं, तो उनके हाथों में रबर ग्लव्स होते हैं, सो दैट दे कैन प्रिवेंट देमसेल्व्स विद इलेक्ट्रिक शॉक. यूजुअली हम अगर देखें, जो छोटे सेल्स होते हैं इलेक्ट्रिक सेल, उनसे हमें करंट नहीं लगता है. क्यों? क्योंकि उनसे जो प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी है, इट इज़ इन वेरी लेस अमाउंट, अबाउट 1.5 वोल्ट. लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में प्रोवाइडेड होती है थ्रू द वायर्स, दे आर अबाउट 220 वोल्ट्स, जिसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है. एंड दैट्स वाई वी गेट इलेक्ट्रिक शॉक फ्रॉम दैट, and we don't feel any electric shock when we use electric cell. So that's all, children, in this chapter. I hope
you understood about the electricity. That's all. Thank you.